Hello everyone, I'm Vaishnavi Sitwaskar. Welcome to my channel. Today we will learn about physical evidences in forensic science. तो अगर आप बीएससी फोरेंसिक साइंस से हैं, एमएससी फोरेंसिक साइंस से हैं, सीयूटी पीजी और यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दिस इज द चैनल फॉर यू. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन. अब हम बात करेंगे कि फिजिकल एविडेंसेस होते क्या हैं. एनी ऑब्जेक्ट दैट थ्रू इट्स एग्जामिनेशन और एनालिसिस कैन एस्टैब्लिश दैट अ क्राइम हैज़ बीन कमिटेड and can provide a link between the culprit and his weapon of offenses, the victim and objects surrounding him, and the crime scene is called a physical evidences. तो बेसिकली फिजिकल एविडेंसेस वो होते हैं, मान लीजिए एक क्राइम सीन है, वहाँ पर एक क्राइम कमिट हुआ है, तो वहाँ पर जो एविडेंसेस कनेक्ट कर रहा है कल्प्रिट को, कल्प्रिट के वेपन को, पर्टिकुलर विक्टिम को और सीन ऑफ क्राइम को, वो कंसिडर करा जाता है एज अ फिजिकल एविडेंसेस. So the classification of physical evidences, two types. One is movable evidences, second one is fixed evidences. So now we study these two evidences briefly. मूवेबल एविडेंसेस. तो मूवेबल एविडेंसेस ऐसे एविडेंसेस होते हैं जो हम क्राइम सीन से इजीली कलेक्ट कर पाएँ, ट्रांसफ़र कर पाएँ फॉरेंसिक लेबोरेटरी में फर्दर एग्जामिनेशन के लिए. तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने रन करे हैं, जैसे वेपन्स हो गया, ब्लड स्टेन क्लोथ्स हो गया, हेयर्स हो गया, फाइबर्स, बुलेट, डॉक्यूमेंट्स, ग्लास फ्रेगमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. सेकंड पॉइंट ये कहता है कि जो भी आपने क्राइम सीन से कलेक्ट करा है एविडेंसेस को, वो प्रॉपर्ली पैक्ड, सील्ड, लेबल्ड होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि कोई भी कंटामिनेशन ना हो. देन हम इसको सैंडविच एग्जामिनेशन के लिए एफएसएल सेंड करते हैं, जहाँ पर डीएनए एनालिसिस, फिंगरप्रिंट एग्जामिनेशन, बैलिस्टिक टेस्टिंग एंड टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस होता है. जो भी एविडेंसेस हैं कहीं ना कहीं डायरेक्टली लिंक करते हैं विद द एक्यूज्ड, विक्टिम एंड सीन ऑफ क्राइम. फिक्स्ड एविडेंसेस. फिक्स्ड एविडेंसेस ऐसे एविडेंसेस होते हैं जो सीन ऑफ क्राइम से हम इजीली रिमूव नहीं कर पाते हैं. तो उस पीरियड ऑफ टाइम पे या तो वहीं एग्जामिन कर लेते हैं, नहीं तो कोई टेक्निक का यूज़ करके उसको लिफ्ट या फिर कलेक्ट करते हैं. तो एग्जांपल है ब्लड स्टेन ऑन द वॉल, फुटप्रिंट्स, टायर मार्क्स, बुलेट होल्स, टूल मार्क्स एंड बर्न पैटर्न्स इन द आर्सन केसेस. तो ये जो एविडेंसेस हैं इनको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? फोटोग्राफ के थ्रू, वीडियोग्राफी, स्केचिंग एंड मेजरमेंट ऑफ द सीन. It is mainly help in reconstructing the crime scene and understanding the sequence of event during investigation. Sources of physical evidences. तो थ्री सोर्सेस है जहाँ से हम इजीली फिजिकल एविडेंसेस को कलेक्ट कर पाएंगे. तो पहला है क्राइम सीन. द प्राइमरी सोर्स ऑफ फिजिकल एविडेंस इज द क्राइम सीन इटसेल्फ. Material such as weapon, bloodstain, footprints, fingerprints, hair, fibers, and other trace evidences are commonly found here. Proper search and documentation of the scenes are essential to avoid loss of contamination of evidences. Second, victim and accused. Physical evidences may also be found on the victim's body and clothes, such as biological fluid, injuries, or foreign material. Similarly, the suspected body and cloth may carry blood, fibers, gunshot residue, or other trace evidences that link them to the crime scene. Third point, related objects and secondary locations. Evidence can also be recovered from the weapons, tools, vehicles, and other objects used in the commission of the crime. Secondary scenes, such as places where stolen property is hidden or a body is moved, may also be contain important physical evidences. तो सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट क्या कहता है? एक्चुअली में सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि जो विक्टिम है, विक्टिम की बॉडी और क्लोथ में भी आपको फिजिकल एविडेंसेस मिलेंगे. सिमिलरली एक्यूज की बॉडी और क्लोथ में भी आपको फिजिकल एविडेंसेस मिलेंगे और लिंक भी करेंगे सीन ऑफ क्राइम से. थर्ड पॉइंट ये कहता है हम एविडेंस वेपन्स और टूल्स और व्हीकल से भी कलेक्ट कर सकते हैं. जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी यूज़ किया गया है क्राइम को कमिट, जो भी ऑब्जेक्ट को यूज़ किया गया है क्राइम को कमिट करने के लिए, वहाँ से भी हम एविडेंसेस फाइंड आउट कर सकते हैं. सेकेंडरी सीन जो होता है, सेकेंडरी सीन जहाँ पर या फिर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि छुपाई गई है या फिर बॉडी को दूसरे प्लेस पर ले जाया गया है, वहाँ पर भी हम एविडेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं. वहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट फिजिकल एविडेंसेस वहाँ पे मिल सकते हैं. नाउ हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल एविडेंसेस. इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल टू लिस्ट द टाइप्स ऑफ फिजिकल एविडेंसेस सिंस इट वुड डिपेंड अपॉन नेचर and location of the crime scene, manner in which the crime has been committed, the topography, and so many other factors. However, the following types of physical evidences may be found in various types of crime. First, body materials. Corpse. The body parts, bones, teeth, hair, skin, tissue, nail,
viscera, etc. Body fluids, blood, blood stain, vomit, sweat, semen, seminal stain, urine, saliva, vaginal swab, and secretion. Second, botanical material. Leaf, seeds, flowers, fruit, bark, wood pieces, sawdust, pollen grains, grasses, plant fibers, and crop fragments. Third, chemical substances: acid, alkalis, petroleum product, kerosene, petrol, explosive, gunpowder residue, narcotic drugs, fertilizer, and industrial chemicals, dyes, and ink. Fourth, weapons: firearms, bullets, cartridges, knife, daggers, sword, blunt object, iron rod stick, and sharp cutting instrument. Fifth, tool: crowbars, screwdriver, hammer, chisel, pliers, wire cutter, lock picking instrument. Sixth, impressions: fingerprints, palm prints, footprints, shoe prints, tire marks, tool marks, bite marks. Seventh है fibers: cotton, wool, silk, nylon, polyester fibers from clothes, carpets, ropes, curtains, etc. Eighth है documents: handwritten letters, printed papers, forged signature, currency note, passport, checks, etc. Ninth, fire materials: burn debris, matchsticks, lighter, kerosene, residue, charred wood, ash, etc. 10. Poisons and their containers: pesticide, tablets, powders, syringe, medicine bottles, chemical containers. 11. Vehicles and their parts: broken headlights, paint chips, glass fragments, number plates, tire pieces, etc. Other objects belonging to the culprit or victim, such as pocket diaries, comb, shoes, identity card, PAN card, cell phone. So, this all are the types of physical evidences based on various type of crime scene. Now, significance of physical evidences. तो बेसिकली क्या सिग्निफिकेंस है फिजिकल एविडेंसेस के वो हम जानेंगे. फर्स्ट पॉइंट, physical evidences prove that a crime has actually been committed. It provides material proof rather than relying only on a statement or confession. Second point, evidences such as fingerprint, bloodstain, hair fibers, weapons, tool marks scientifically connect the suspect with the victim and the place of a crime. तो पहला पॉइंट ये कहता है कि फिजिकल एविडेंसेस जो हमें मिले हैं सीन ऑफ क्राइम से वो ये बताते हैं कि एक्चुअल में जो है इस पर्टिकुलर क्राइम सीन में कुछ क्राइम कमिट हुआ है. सेकेंड पॉइंट ये बताता है कहीं ना कहीं जो भी एविडेंसेस हमें मिले हैं चाहे वो कोई से भी क्राइम सीन हो उसमें जो भी एविडेंस हमें मिला है कहीं ना कहीं वो कनेक्ट करेंगे सस्पेक्ट को, विक्टिम को और प्लेस ऑफ अक्रेंस को. Third point, by examining patterns like bloodstain distribution, bullet trajectory, footprints, or fracture marks, investigator can reconstruct how the crime happens and identify the weapons or method used. Fourth point, properly collected and preserved physical evidences strengthen prosecution or defense argument. It may prove guilty or even establish innocence, ensuring fair and scientific justice. तो बेसिकली थर्ड पॉइंट ये कहता है कहीं ना कहीं हेल्प करता है क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट करने में और वेपन्स और मेथड यूज को आइडेंटिफाई करने में. फोर्थ पॉइंट ये कहता है जो भी एविडेंसेस हमने कलेक्ट और प्रिजर्व किए कहीं ना कहीं वो हेल्प करते हैं टू प्रोवाइड अ फेयर एंड साइंटिफिक जस्टिस. So that's all about physical evidences. Thank you for watching. Keep learning and stay curious. See you in the next video. Do not forget to like, share and subscribe for more forensic science videos.